खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। Thank you for joining us on This is Exclusive at 7 p.m. I'm Niranjan, coming to you with two big stories. One from Bengal. Our focus in the last few days has been on Bengal. Our primary focus on the state and safety of Hindus and Hindu families in Bengal as mobs run riot. That and the story of Ali Murtaza, a man who claims he was radicalized during his pilgrimage to Mecca. Coming up on the show. Here are the headlines. Are Hindus unsafe in Bengal? Fear gripping Murshidabad. Hindu families fleeing their homes. Union Minister visits the migrant camps where the Hindu families are asking for protection. Tensions continue to grip Bengal as protests over the Waqf Act spiral out of control. Mobs not even sparing Mamata Banerjee's police, who chosen to stay quiet all these years. A man from Meerut alleges he was held hostage, trapped during his pilgrimage to Mecca. He's joining us on the show this evening. He's a legislator sworn by the Constitution. Trinamool Congress MLA warns that if the Waqf Act is not abolished, the whole of India will be occupied. He says, occupied by whom is the question. Fugitive businessman Mehul Choksi arrested in Belgium. Antiguan Prime Minister Gaston Brown confirms his citizenship has been revoked. As we break down the details of the violence in Bengal's Murshidabad, it's not just Murshidabad anymore. The violence has spread beyond Murshidabad. We have 5 videos that we're getting to you on the show this evening that tell you one big story, one headline, that Hindus are not safe in Bengal, in their homeland. They're almost being treated as refugees. We're not talking about Bangladesh, we're talking about Bengal. Here's the first breaking on the show this evening. Even sadhus not spared in Bengal. Even sadhus not spared by the mobs who are protesting violently against the Waqf Act. Sadhus who are targeted in Siliguri, hospitalized after an attack by the mobs. Take a look at these visuals. These are the pictures that came in from Siliguri, where even sadhus were targeted. Their bones broken, hospitalized in Siliguri. Hindus not safe in their own country. And these are pictures that came in of them being hospitalized after a violent attack on them. Let's get to the next set of pictures. The next set of pictures coming in from Bengal once again, where Hindu families who are targeted in Murshidabad being forced to leave homes. Hindu families taking refuge in migrant camps. Refugees in their own country. Take a look at these pictures of the families being forced into migrant camps after the wave of violence that targeted certain areas of Murshidabad. They were displaced. Union ministers have been visiting them. Mamata Banerjee is silent. She will not say a word about these Hindu families. Many temples have also been targeted. We showed you the pictures over the weekend. Saturday evening on Republic, we showed you the pictures of temples being vandalized, Hindu homes being targeted. These are pictures of Shukonta Majumdar, Union Minister, meeting the Hindu families, breaking down as they are treated as refugees in their own country. Let me go across to Kishale, joining us live from the Republic Bangla newsroom. Kishale joining us. Kishale was watching your show on Republic Bangla a few minutes back, and this was the theme. Even Hindus not safe in their own country. Tell us about these two incidents. Sadhus being targeted,
Hindu families being moved out, forced out of their own homes. Kishore. Well, exactly the news we are just breaking. This has been one of the incidents, one of the many incidents where Hindu sadhus were being attacked in Bengal. Now, the incident from Siliguri is heart-wrenching. We know that there is a festival in Bengal called Gajon Utsav. It's a festival dedicated to Lord Shiva, where for 7 days devotees take a 7-day sannyas. This is called Gajon Sannyas. Now, those 7 days are very ritualistic, there are many rituals that the devotees have to go through, that the sannyasis have to go through. Now, after the days of ritual, they were sitting beside a water body. They were taking rest while these two sadhus, these two Gajan sannyasis, devotees who turned into sannyasis for 7 days of those rituals, they were attacked. They were attacked with stones, with bottles, and with sticks. And they have been now hospitalized. So these sannyasis, Gajan sannyasis or Chadok Broti sannyasi, it is known, they are known as in Bengal. They are right now in hospital. And the reason is that they were performing the rituals that they were supposed to. They didn't even know why they were attacked. Now, after the Waqf law was passed, we have seen in Murshidabad, the Hindus had to leave their homes and had to go to refugee camps in their own country, in their own state. They are refugees now. And on the other hand, sadhus are being attacked and they are being hospitalized. This is the condition of Hindus, sadhus and normal Hindu devotees at their households alike. Not in Bangladesh, but in West Bengal. And Mamata Banerjee's police has been failing to contain the violence, even in Bhangod, which was happening a while back. We were showing how Bhangod is also burning South 24 Pargana. This is the condition of Hindus in Bengal right now, Niranjan. Stay with me, Kishore, because I have 3 more videos coming into our newsrooms right now. 3 more videos from Bengal. Let me play out the 3rd video on the show this evening of the violent clash between cops and mobs in Bengal as highways were blocked by these mobs who are protesting the new Waqf Act. One MLA even said that if the Waqf Act is not abolished, all of India will be occupied. Can you imagine the arrogance of these people who said that they will occupy India? Who are these people? Look at this. Let's play out the nats, the ambience there, just to give you a sense of the situation. And the 4th video that we have is of the police in West Bengal, the same police that for long has chosen to crawl when they were not even asked to bend. The police in Bengal have been targeted. Not even the police spared vehicles of the police, bikes, cars, torched. My bobs who are protesting the new Waqf Act. Look at these pictures and then we'll go across to Kishore. Those are pictures of the vehicles of the police torched in Murshidabad, even as paramilitary forces have been deployed across Murshidabad. The Supreme Court, there is also a petition in the Supreme Court seeking an investigation by a special team into the Murshidabad violence. A petition has been filed in the Calcutta High Court. The courts had to intervene and say that there was no choice but for them to intervene as the state had failed to control the situation. And despite the paramilitary forces, Kishore, if this is a situation, it's very, very serious. Well, exactly. Now, which parts of Bengal is affected? Well, from north to south, almost a large portion of the districts lining up all that from the sea to the mountain, if I may say so, because Siliguri, we just saw how the sadhus were attacked. In Malda and Murshidabad, which is in the central part of Bengal, we see how the vehicles are burning. They're torched. Hindus had to leave their homes. And now, South 24 Pargana, which is in the south of Bengal. So north, Siliguri, in the central Bengal, Murshidabad, Malda, and in the southern part of Bengal, South 24 Parganas. All these districts are being affected by these miscreants
who are trying to protest against the Waqf law by burning down houses of Hindus or attacking police vehicles or by trying to slit the throat of sadhus and beating them with bottles and trying to throw them into water bodies. This is what is happening in Bengal. We have seen in Siliguri sadhus were being attacked, though that event has not been directly connected to the Waqf protest, but it comes at the same time when this protest is happening all over Bengal. We've seen how in Siliguri, in Murshidabad, the Hindus had to leave their homes. They had to become refugees in their own country, in their own state. And this is unprecedented in history. In Indian history, I feel this is quite unprecedented. Only precedence I can get is of the Kashmiri Pandits who had to leave their homes and go to other parts of the country because they were persecuted. That's what is happening in Bengal in Murshidabad right now. And then in South 24 Pargana, police vehicles were torched, attacked, destroyed. So it's spreading. It's spreading from north to south. And now we have to see what Mamata Banerjee's police will be doing, because they are literally doing nothing much. That's the reason that the central forces had to intervene, and under the High Court's order, they are now route marching in Murshidabad and other parts of Bengal. Niranjan. You know, I want you to stay with me, because this tells you, and this soundbite that we will play next will tell you the full story of what is happening in Bengal. This is a Trinamool Congress MLA. Trinamool Congress MLA who said that the Waqf Act, if it's not abolished, all of India will be occupied. He said all of India will be occupied. Occupied by whom, Mr. MLA, is the question. Listen into this with the translation. Trinamool Congress MLA saying all of India will be occupied. Take a look. Listen into this. ওয়াকাফ বিল প্রত্যাহার না করলে এর থেকে আরো 10 গুণ আন্দোলন হবে, হয়তো পার্লামেন্ট ঘেরা হবে। আমরা অপেক্ষায় রয়েছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘর বোল্ডের সহিত বলেছেন যে পশ্চিম বাংলায় ওয়াকাফ বিল আমি লাগু হতে দিব না। সব কাস্ট লোক মিলে ভারতবর্ষ অবরুদ্ধ করে দেবে, পার্লামেন্টে তারা ঢুকতে পারবে না, পার্লামেন্টে আন্দোলন যাবে পার্লামেন্টের উপরে। এই ওয়াকাফ বিল প্রত্যাহার না করলে এর থেকে আরো 10 গুণ আন্দোলন হবে, হয়তো পার্লামেন্ট ঘেরা হবে। আমরা অপেক্ষায় রয়েছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘর বোল্ডের সহিত বলেছেন যে পশ্চিম বাংলায় ওয়াকাফ বিল আমি লাগু হতে দিব না। সব কাস্ট লোক মিলে ভারতবর্ষ অবরুদ্ধ করে দেবে, পার্লামেন্টে তারা ঢুকতে পারবে না, পার্লামেন্টে আন্দোলন যাবে পার্লামেন্টের উপরে। I'm going across to the next story right now. So we're going to follow up that story and get the response of this MLA who said that they will occupy all of India. Okay, let's move on to the next story now. His name is Ali Murtaza. Ali Murtaza is a man from Meerut, Uttar Pradesh, claims that he went to a travel agent to visit Umrah, the pilgrimage, and he says the travel agent who tried to take him to Umrah then trapped him and forced him into terror trading. He claims he was radicalized and brainwashed. He's joining us on the show this evening. Ali Murtaza ji, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो हमारे जो दर्शक है, रिपब्लिक के जो दर्शक है, उनको बताइए क्या हुआ आपके साथ। देखिए, मैं 26 तारीख को यहाँ से इंडिया से उम्रे के लिए गया था और 2 तारीख तक मेरे साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन वहाँ पे मुझे जो मेरे एजेंट ने कुछ मुझे परेशानियां होटल में हो रही थी, जिसकी शिकायत मैं अपने बार बार एजेंट से कर रहा था। तो एजेंट ने मुझे एक नंबर सजेस्ट किया जो हाजी शहजाद नाम का एक व्यक्ति है, सहारनपुर का रहने वाला, बताया था कि सहारनपुर का है और ये आपकी मदद करेगा। तो उस व्यक्ति से मेरा संपर्क 2 तारीख में वहाँ मक्के में हुआ। वो मेरे पास में आया, उसने पूछा क्या परेशानी है, मैं उसकी परेशानी बताई। उसने कहा कि आप मेरे साथ रहिए, मैं आपकी सारी परेशानियों को हल कर दूंगा। और उसके साथ फिर से मेरा रहना सहना, उसके साथ में आना जाना शुरू हो गया। तो उसके बाद में उसने मुझे वहाँ पे जब हम फ्री टाइम होते थे, रूम में होते थे, तो वो मुझे डिस्कशन करता था सीए पे, एनआरसी पे, वक़्फ़ बिल पे, इस तरह के मुद्दों पे करता था। मुझसे कहता था कि भाई ये कोई डिस्कशन की कुछ जगह नहीं है, हम किसी और मुद्दे के मकसद के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो उसने 2 दिन मुझे इसी तरह से उसने मुझे पहले चेक किया कि वो किस तरह की मेंटलिटी क्या है, किस तरह करेगा ये। फिर इसने मुझे 4 तारीख को इसने मुझे कहा कि अपना मुझे पासपोर्ट दे दीजिए, मैं आपको जियारत कराऊंगा और आपके जो पासपोर्ट पे जियारत चढ़ेंगी।
इसी संबंध में मैंने उसको पासपोर्ट दे दिया और फिर उसने जो जब हम डेली आना जाना हुआ तो मुझसे कहता था कि भाई देखिए हिंदुस्तान के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मोदी सरकार ये कर रही है, बड़ा जुल्म कर रही है, आप देश के पढ़े लिखे युवा हैं, आपको आगे आने चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। इस तरह की मुझसे बातें करने लगा। और इसने 5 तारीख तक इसने पूरा मुझे परेशान किया और इसने अपना मुद्दा इसने बताया कि मैं सीरिया के लिए काम करता हूँ, सीरिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं ISI के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ जो युवा लड़के होते हैं मैं उनसे बातचीत करता हूँ, जो उनकी मैं मदद करता हूँ, उनको मैं लड़ाके बनाता हूँ, आपको भी मैं कमांडर बनाऊंगा और आप मेरे कहना मानिए चले जाइए, आपको $50,000 पर महीने के आपको सैलरी दी जाएगी, आपके परिवार का ख्याल रखा जाएगा। $50,000 इस तरह के मुझे वो फिर एक मिनट, $50,000 एक महीने, एक महीने के लिए। अच्छा, तो ये और कौन से ग्रुप के, और कौन से ग्रुप के ट्रेनिंग के लिए, मैंने ना तो ऐसी कौन से ग्रुप से जुड़ने के लिए? उसने कहा कि हमारा जो IS करके कुछ है कि मेरा वहाँ पे सीरिया में हमारा नेटवर्क है, मैं उसके लिए काम करता हूँ, मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ, मैंने 250 करोड़ की संपत्ति कमाई है, आप 20 दिन इसी तरह से बनेंगे, आपके परिवार का ख्याल रखा जाएगा, आपको वहाँ कमांडर बना जाएगा, सैकड़ों की फोर्स तादाद में आपके पीछे रहेगी। क्या ये जो एजेंट आपको वहाँ बाकी अली जी, ये जो एजेंट है, क्या ये एजेंट आपको ये भी बताया कि अभी तक कितने लोगों को लेके गया है यहाँ से, इंडिया से, भारत से? ये कहता है कि मैं हर महीने यहाँ पे 1000 से ज्यादा उम्र वालों को मैं इंडिया से लेके आता हूँ, जो उसमें यंगस्टर होते हैं, जिनकी मैं उनसे बातचीत करता हूँ, जो लोग तैयार हो जाते हैं मिशन के लिए, मैं उनकी मदद करता हूँ उन्हें भेजने में, और हर साल मैं 150 लोगों को मैं भेज ही देता हूँ। आप भी मुझे काबिल लगे, आपको भी मैं भेजूंगा। 150 लोग भेज ही देता हूँ सीरिया? एक ही 50 लोग भेज ही देता हूँ सीरिया? हाँ, उसने कहा कि मैं भेज देता हूँ कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोगों से मेरा संपर्क रहता है, मैं यहाँ आता हूँ, तो जब मेरा एक बार संपर्क हो जाता है फिर उन लोगों के थ्रू भी मुझे कोई ना कोई मिल जाता है। आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, आपको भी आगे आना चाहिए और जिहाद के रास्ते में आपको निकलना चाहिए। मैंने उससे बहुत मना करता था, लेकिन उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया था, जो फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने मुझे बहुत फोर्स किया मेरे मना करने पर। उसने कहा मैं आपको यहाँ नशे के कारोबार में फंसा दूंगा, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, आप अपने घर वालों को कभी नहीं देख पाएंगे। इस तरह का मुझे बहुत उसने ब्लैकमेल किया, ये इस हाजी शहजाद ने। वापस कैसे आया? बड़ी मुश्किल। मैंने 11 तारीख को मुझे एक मौका मिल गया था, मैंने एक वीडियो मैंने शूट किया था और उसको मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था और सोशल मीडिया पे सऊदी से लगाया था उसके माध्यम से। हाँ, तो उस व्यक्ति उसके माध्यम से कुछ लोगों का मुझे कॉल आया, कुछ लोग मेरे नज़दीक थे, मेरे ही क्षेत्र के लोग थे, तो मुझे वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने अरबी वगैरह आती थी उनको, उन्होंने वहाँ पे उनसे बातचीत की, कुछ हंगामा किया, तो मेरा उन्होंने पासपोर्ट इस तरह से दिया कि ये तो पासपोर्ट यहाँ पड़ा था, रूम में पड़ा था और इसके एजेंट का कोई अता पता नहीं है, इसके एजेंट को हम नहीं जानते हैं। और फिर जो लोग वहाँ मेरी मदद के लिए गए थे उन लोगों ने मेरा टिकट कराया, फिर मुझे इंडिया भेजा। उन्होंने क्या कि भी आप यहाँ कुछ मत करिए, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता है, ये इस तरह के आदमी बहुत खतरनाक होते हैं, आपके खिलाफ कोई साजिश रच देंगे, आपको यहाँ फंसा देंगे, आप सारी जिंदगी भर आप ये फंसे रह जाएंगे और हम आपका टिकट करा देते हैं, आप चले जाइए, क्योंकि यहाँ ये आता जाता रहता है, आप तो पहली बार आए हैं, इसका यहाँ संगठन है, इसके यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं जो इसके नेटवर्क में काम करते हैं, ये आप इनका यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भारत चले जाइए, भारत सरकार ही आपकी मदद करेगी। उन लोगों ने मुझे बड़ी मेरी मदद की और भारत सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ, मोदी जी का, जिन्होंने मेरी मदद की और मैं इंडिया वापस आया हूँ। और अभी भी ये व्यक्ति जो है कुछ मेरे परिवार के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने बयान वापस लो। मैं मोदी जी से और योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे और मेरे परिवार को सिक्योरिटी दी जाए और इस व्यक्ति के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए, ताकि जो नेटवर्क चला रहा है इसका भंडाफोड़ हो, इसकी जो है इसको जेल हो और इसको सजा मिले। अभी अरेस्ट हो गया ना? अभी जो जानकारी है उसका अरेस्ट भी हो गया है।
नहीं, मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है कि कोई अरेस्ट हुआ है। एक जो एजेंट था, मेरा लोकल एजेंट था, उसको कल पर किसी वक्त छोड़ दिया गया है। मुझे जानकारी ये है कि जो मेरे पास जानकारी है। क्या आपको कोई लेकिन जो धमकी ये आ रही हाजी है, शहजाद- कोई धमकी आ रही है, कोई कॉल कर रहा है आपको, कोई थ्रेट परसेप्शन है आपका? हाँ, वो यही है कि भी आपने ये गलत किया, आपने जो है ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था और आपको भविष्य में भुगता जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। इस तरह के मेरे पास में बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं मुझे, मेरे परिवार वालों को। और मैं लोकल प्रशासन से कहूँगा कि मेरे सहयोग दें। योगी जी से मैं अपील करूँगा, मोदी जी से अपील करूँगा कि मेरी सिक्योरिटी का समाधान किया जाए और इसकी गिरफ्तारी हो और इसके खिलाफ जो है केंद्रीय जांच एजेंसियां कम से कम जांच करें, क्योंकि ये देश विरोधी आतंकवादी चला रहा है ये। तो मैं इस चाहता हूं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो देश के अंदर और देश के को इस तरह के लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हाँ जी, और मेरे साथ में मेरी मदद करनी चाहिए। हमारा भी ये अपील है कि यूपी पुलिस और योगी सरकार आपका सहयोग करे। थैंक यू अली मुर्तजा जी बात करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग करेज, हैविंग द करेज टू स्पीक आउट अबाउट दिस. He says that he's already getting calls asking why he spoke out against the agent who tried to radicalize or lure him into joining ISIS while he was on a pilgrimage, and that too in Mecca. He was on Umrah. Thank you, Ali Murtuza, for joining us on Republic this evening. I'm going across to some breaking news that is coming in on Mehul Choksi, the fugitive, another fugitive being dragged back to India. Ridhamanand Bharadwaj, my colleague, is joining us on the big breaking news right now on the Choksi case, which is entering phase 3. There will be a first set of arguments on which basis the Justice Minister will decide in Belgium. This will take a few weeks. Let me go across straight to her. She's joining us with the details. Rhythm, are you there? Okay. As Rhythm joins us on the phone line, this is how the system will work in the Choksi case, the extradition process. First, there's a request review. The request is initially reviewed for its adherence to treaty obligations and Belgian law. A judicial phase where a court will examine whether the conditions for extradition are met, including the dual criminality principle. The act must be a crime in both countries. And third, a ministerial decision will be taken following a court's decision that extradition is permissible. The final decision is to extradite, and that is made at the ministerial level, typically by the Minister of Justice in Belgium. And this is the breaking news coming in. My colleague Ridhamanand Bharadwaj, who shared the details of the Choksi extradition entering phase 3. We'll take a break now and we'll come back with the breaking news details. Shawan, my colleague, will also be joining us in just a few seconds. Once again, it's entering a critical phase now. Choksi's somehow been able to evade Indian law, Indian agencies for many years now. In Antigua and Barbuda, the islands where he was hiding for many, many years, and those pictures that you see there from 2021 was his drama in Antigua when he was almost picked up by our agencies, and he just missed by a whisker, and he's now been arrested in Belgium. Shawan, where are we headed now? Well, in fact, earlier this afternoon, Niranjan, you had the Belgium Department of Justice in an email response to Republic TV stating that Mehul Choksi has been detained for judicial proceedings. Now, our legal editor, Ridhamanand Bharadwaj, has got us details about the 3 stages of the extradition process. First, it's the review stage. They're essentially going to look into whether at all the extradition criteria is met or not. The second is with regards to the judicial phase, that is the time where you have Mehul Choksi, who gets the opportunity to challenge the arrest in the first place. Once the court basically grants its approval, it's the ministerial decision. That's the Department of Justice that will finally decide whether at all the extradition criteria is met or not. In fact, it's important to point out here that things appear to be far better than what it was in the case of Antigua, where we did not have an extradition treaty. But recently, there's an extradition treaty that was signed by Prime Minister Modi and the Belgian Prime Minister, paving the way for economic fugitives to come back and face justice. So, as far as the Indian investigative agencies are concerned, they certainly sense an opportunity. Thank you for joining us with those details, Shawan, with the big breaking story there on Mehul Choksi. Is he next after Tahavur Rana? That's it on this edition of This Is Exclusive. Trending coming up next, but the big debate with Arnab on the story in Bengal and Mehul Choksi as we go one fugitive after the next. Thanks for watching.
इसका अपार। तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH